हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और हमने लास्ट वीडियो में 6 तक के न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व कर लिए थे। संदीप गर्ग बुक, चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट some more questions, right? So I have already shared the screenshot, but still you can have it. That is 7 and 8 question we are going to do, okay? And 9, 10 you can take it for your homework, right? Only 10 questions are here. 7 and 8 we are going to start right now. Take the screenshot. Question number 7, government budget unsolved. Sandeep Garg. Okay. Okay, so now in question number 7, it states, from the given information, calculate revenue receipts. So you need to calculate revenue receipts. Then fiscal deficit. And C, primary deficit, means all kind of deficit. So one by one, we are going to calculate that. The first one is revenue deficit. So I'm just writing it in short form. Revenue deficit is equals to, we know the formula. We will consider only revenue expenditure minus revenue receipts. So this is the formula, right? You remember the A part we are solving first, right? Now here they are given what? Revenue deficit is given, right? Revenue deficit is given, and revenue expenditure is given, okay? And capital expenditure, non-debt creating capital receipts, and interest payment. Okay, so what we will do here, we will write, just wait for a while, revenue receipts is deficit. Okay, so revenue deficit is, first we need to calculate revenue deficit. इन्होंने मुझे बताया है, okay? तो रेवेन्यू डेफिसिट मुझे दे रखा है इन्होंने, तो वी विल राइट रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट होगा ना, मुझे कैलकुलेट करना है रिसिप्ट्स को, राइट? द फॉर्मूला इज रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या है यहाँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही थी ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें कैलकुलेट करना है, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ओके? देन रेवेन्यू डेफिसिट मुझे गिवन है यहाँ पे 6000, आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज हियर, is equals to revenue expenditure is also given 11,000, and one now we need to find out the revenue receipts, right? ये आपका है given. Now what you will do, आप इसको एक तरफ कर लेंगे, revenue receipts equals to, now 11,000 यहाँ पे था, ये क्या जगह प्लस का था, ये माइनस में आ गया, so you will get revenue receipts is equals to rupees 5,000, और क्वेश्चन में देखना करोड़ में या अरब्स में है, ये जरूर लिखिएगा बिकॉज यू विल गेट द पॉइंट ऑन दिस। द फर्स्ट वन इज रुपीज 5,000 करोड़, तो पहले का आंसर मैंने कैलकुलेट करके रख दिया। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड, बी पार्ट। बी पार्ट इज फिजिकल डेफिसिट, okay? And the formula for fiscal deficit is, means
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड्स बोरोइंग, यानी कैपिटल रेवेन्यू सब कुछ आ जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, एक्सक्लूड्स बोरोइंग. नाउ वी विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, दैट इज, अब हम यहाँ पे वर्किंग दिखा देते हैं, राइट, कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है. वर्किंग में क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है. ओके, माइनस हमें क्या करना है, इसमें से दोनों को मिला के माइनस करेंगे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. यही तो होगा टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, रिसिप्ट्स, राइट. अब यहाँ पे क्या गिवन है, 11,000 आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इसी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं सिर्फ ऊपर आपके वैल्यूज पुट कर देती हूँ. प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गिवन 14,000. ओके, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है, मैंने कैलकुलेट करके रखी है, ये गिवन है ना 5,000, यहाँ पे रख लो. प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स 8,000. नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज द, we will add here. Okay, that is 8,000. So यहाँ पे कितना आना चाहिए, 11 प्लस 14, 25,000 ये हो गया. ठीक है, 25,000 एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस 8 for 12 and 13,000 ये आ गया. ठीक है, तो हमको भी यहाँ पे ये लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज 25,000. वी विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, माइनस आपका टोटल आपका रिसिप्ट्स क्या हो गई, रेवेन्यू एंड कैपिटल को मिला के, दैट इज 13,000. सो वट एवर यू आर गेटिंग is your fiscal deficit rupees. So 25 minus 13, you will get 12,000. 12,000 crore is your answer, right? तो ये फिजिकल डेफिसिट हमारा आ गया 12,000 crores, right? Now the last is प्राइमरी डेफिसिट. मैं एक ही जगह पे सबका सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट. तो अब हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना निकला है, कैलकुलेट करके 12,000 आई गया. we'll just write the value 12,000 minus interest payment given in the question itself 7,000. So whatever is there left, that is 5,000 crore is your answer. This is your primary deficit, right? So you can say here, this is your answer, revenue receipts, right? This is your primary receipt, and don't forget to write rupees, crores and all, okay, in your answer sheet. Please do it. And this is your fiscal deficit, right? आंसर इस तरह थोड़ा सा अलग से शो कर देना, हाईलाइट कर देना. गॉट इट? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now question number 8. In question number 8 it states again, calculate capital expenditure then interest payments. Fine.
So this is the information they have given: primary deficit, fiscal deficit, non-debt creating capital receipts and revenue deficit उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या होगा हमें पता है, यहाँ पे उन्होंने दिया है फिस्कल डेफिसिट होता क्या है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमें फॉर्मूला फ्रेम करना पड़ेगा, राइट, माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि हमें कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर भी उसमें निकालना है, राइट, एक्सक्लूड्स बोरोइंग। Now what we will do here, fiscal deficit is already given 11,000 is equals to revenue deficit आपका कितना है 5,000 प्लस capital expenditure minus capital receipts, non-debt creating capital receipts is 9,000. Got it? Simplified. Capital receipt को एक तरफ कर दो तो 5,000 कितना आ जाएगा आपका, जस्ट हो गया 9,000 minus 5,000। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, हम इसको इधर ले लेते हैं, जस्ट वेट, 11,000 minus 5,000 and plus 9,000, got it, equals to capital expenditure। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, रुपीज 15,000 करोड़। ओके, ये एक आ गया आपका आंसर। सेकंड का क्या है, बी का इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इज द फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट हमारे पास है 11,000 और प्राइमरी डेफिसिट भी है 8,000। Put the values 8,000, 11,000 from the table, okay, जो आपको दिया गया, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ही मुझे कैलकुलेट करना है। सो व्हाट यू विल डू, इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल्स टू 11,000, इसको इधर ले लो, प्लस का माइनस में आ गया, ओके, माइनस 8,000 रुपीज 3,000 crores is your answer, that is interest payment equals to rupees 3,000 crores. Okay, please take the screenshot. Hope you like the video. In the last video, I'll just upload the solution and I've already given you as a homework also. Okay, 9 and 10. With this, we come to the end of this part here. Hopefully you like it. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.